angle which was 54 degree. So when he reached to the middle of the construction of the pyramid, he started to see some cracks happened in the rocks. And the cracks happened even. बट ये कोलैप्स कर गया है पूरा पिरामिड, तो इसीलिए टूटी फूटी हालत में है। और हमारा टूर गाइड कर रहा है इसके अंदर हम जा सकते हैं इस पिरामिड के, तो ठीक है। तो ये पिरामिड के अंदर जाने का रास्ता है, बहुत ही कंजस्टेड है। सर अपना जो है बहुत ध्यान से रखना है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं एक पूरा जो कि कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पर किंग्स दफन होते थे और जो भी जो है उनके रिचुअल्स वगैरह होते थे। थोड़ा हम ऊंचाई पर आ गए हैं, यहाँ से पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो दिखता है। तो ये देख सकते हैं वो सामने जो आपको एक छत नज़र आ रही है, वो वहाँ से एंट्रेंस था, वो जो कॉलम्स वगैरह थे। और ये पूरा यहाँ से जो है सारी बिल्डिंग्स बनी हुई जहाँ वो कस्टम्स होते थे, रिचुअल्स, फेस्टिवल्स। और ये सामने जो है पिरामिड है, जिसके नज़दीक से अभी हम आ रहे थे। अभी हम लोग चलते हैं वापस, हमारा टूर गाइड इंतज़ार कर रहा है। That's the pyramid of King Onas, but Okay. collapsed It's collapsed. pyramid. Okay. But inside this pyramid, we found for the first time something called the pyramid texts. The pyramid text is a religious spells, a hieroglyphic inscriptions, Okay. religious spells on the deceased for a protection, kind of a protection. Okay. Okay, that's the first time we found inside it, and the first time as well we find inside the pyramid another kind of the stones. We found the alabaster stone. We found the walls. Not the limestone. Not limestone. The alabaster stone is totally different stone. Okay. The alabaster stone is lighting. When you flash a light on it, Okay, it will shine. It it will will be shining. glowing. It will be lighting. Okay. Yeah, you know this? Yeah. It will. Yeah. That's the first time we see inside the pyramids another different kind of stone, and the alabaster specifically. Okay. Okay. Now we're going down. I'll let you go inside the pyramids. Okay. Okay. But first, I can't go down with you because it's forbidden for the guides. Be down with the Okay. tourists. Okay. And there's a guy who will lead you down there and will show you all the what I told about. Okay. So yeah, so definitely worth going to see. Do I have it? If you go down, the guys will tell you everything. तो ये जो स्ट्रक्चर है, पहले इस तरीके से कि उनके मकबरे बनते थे मड के, मिट्टी के। और बाद में उन्होंने जो है ये जो आयमन हतेब जो उनका आर्किटेक्चर था, उसने ये चीज़ें जो हैं स्टोन से बनाना शुरू कर दी, लाइम स्टोन से। तो ये काइंड ऑफ एक पुराने ज़माने का जो है आप कह सकते हो मकबरे हैं यहाँ पर बने हुए, इसको नेक्रोपोलिस भी कहते हैं। और ये सामने जो पिरामिड है किंग, उसका नाम भूल गया मैं, कुछ किंग नवास और नस्र, समथिंग लाइक दैट। बट ये कोलैप्स कर गया है पूरा पिरामिड, तो इसीलिए टूटी फूटी हालत में है। और हमारा टूर गाइड कर रहा है इसके अंदर हम जा सकते हैं इस पिरामिड के, तो ठीक है देखते हैं। वो कह रहा है कि मैं नहीं जा सकता हूँ, लेकिन आप अंदर जा सकते हो, बंदे आप वहाँ पे रहते हैं वो लेके जाएंगे। Here another entrance here. Okay. Pyramid. Okay. The same pyramid here. All right. तो ये पिरामिड के अंदर जाने का रास्ता है, बहुत ही कंजस्टेड है। सर अपना जो है बहुत ध्यान से रखना है, चोट फेट ना लग जाए। ऑलराइट, अब यहाँ से अंदर जाते हैं।
सीधे चलना तो मुश्किल है यहाँ पर, बिल्कुल ये ऐसे सामने ही छत है। ये यहाँ पर कुछ जो हायरोग्लिफ्स जो फिरौन के ज़माने की जो भाषा होती थी, जिस तरीके से वो लोग लिखते थे, ये वो है। Dit de pyramid weer van de regel van de veel koelnest. Koelnest, maar ik zei het. En verloop je hier? Oei, sorry. Hier? Als koelnest. Koelnest. Dus ik had veel Koran in de springen. En zij hier, dit holografie. Bloembuur. Dit originaal. Dus de weer, dit is de bloem. De bloem is originaal. Dat weet je niet. Dat is ook niet originaal. De afbeheer, dit is gedaan. Dat is dan de original. ये ऊपर स्टार्स बने हुए I think he's ready to get up. Yeah. Okay, ready? अंदर चलते हैं, यहाँ देखते हैं क्या है। ये ऐसा लग रहा है जो यहाँ पर दफनाया जाता था वो जगह है। देखते हैं ये बंदा क्या बता। Is goed. Kan je hier? Ja. Monsieur, kan je spelen? Is goed. Hier, die sarcophagus hier. Sarcophagus, de momia, king governaars. Voor de momie, Egyptische muziek kan je. Die basalto, no garanis. Sarcophagus voor de momia, voor de wiet hier. Voor de enter is small. Sarcophagus voor de enter no. Sarcophagus voor de momia. Voor de slippen hier, after voor de pyramid hier. No enter is small. Ham verlokken hier. Voor de heer, dit is alabaster, weet? Dit is alabaster. Alabaster voor de light. Alabaster. Voor de heer, dit is de limestone, weet? Is de finish light. Alabaster voor de light. Ham verlokken hier. Voor de statue. Voor de statue op de Kunas. Voor de vorm. Voor de light hier, voor de statue. Hier. The statue here. You understand? Yes. This is statue of Pharaoh Unas, 5 dynasty. Is that one lie? It's a finished statue. Okay. Lie for the statue here. Amazing. Yes. Here for the blue. It's the blue is original for the alabaster. Blue is origin here. Same here. Okay, photo. Same here, the statue? Same. Here. ये बता रहे हैं जब वहाँ पे लाइट पड़ती है ना तो ये जो एक स्टैचू है वो नजर आता है जब लाइट मारते हैं। स्टोन जो अलाबास्टर है ग्लो करता है जब लाइट पड़ती है, तो ये वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चमकता है स्टैचू, वैसे आपको नॉर्मली कुछ नजर नहीं आएगा, लाइट पड़ेगी तो देयर इज एन स्टैचू साइड। Estate preparado. Sí, pero tengo 5. Ya da igual. अच्छा अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं। यहाँ से बाहर निकलते हैं और सबको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। Em mà bảo với tao này cái làm gì? Ed è che non è gran spara.
यहाँ से अंदर जाना है, यहाँ से बाहर निकलना है। सामने आपको लाइट नजर आ रही है। Vaya hoy es el día de la mutación. Yes, there was here Okay, big shaft. okay, This shaft, they used to store ships inside this shaft, okay, and there was a tomb inside it. okay. Okay, if you came here, you find how it's deep, Oh my God. and you can see Oh my God. the holes inside the walls. Right. They used to put wooden beams in these holes Okay. and would the ships over each other, Okay. and they're grabbing it out by the ropes. So it was for water? Like for the chips, boats Okay. that they used transfer the stones on it on the Nile River, Oh, because okay. the Nile River was passing from here in the ancient time. Oh, okay, okay. Okay. Boat for this is for boats. Okay. Yeah, Okay. this is the tomb for the priest, for the princess of Sisshit. Okay. And you will find here the daily life scenes that they depicted on the walls. Oh, okay. In that tomb, then another tomb they had. So, but they are Yeah. yeah. These are individual scenes. Okay. They use here you can see how they use the fish. Okay. You can see many types of the fishes here. Okay. And how they used to fish, how they catch the fishes here. And this is the net. They used the net to Catch the catch, yeah, to get them. Okay. Yeah. And here you will see the craftsmen. They're doing the crafts objects here. Okay. Some of them making some ceremonies in front of them. And here we have the scene. The scene shows us the princess here, and she's smelling the lotus flower. And here she's standing on a wooden beam, and then Okay. this one is grabbing her into this tomb here. Okay. Okay, and he's following the water, so it will be easy for grabbing. Grab. And she is smelling the lotus flower because they believe that if she smells the lotus flower, she will be resurrected. Oh, It will help. okay. Okay. Here, the cow position. You see these cows. They used to slaughter this cow Okay. and offering it to the princess here. Okay. Yeah. You can see the baby jackal here, baby cow. How it catch it, and the duck. Many kinds of birds here as well. Duck. So Ducks here. they would all sacrifice and offer it to the That's prince. sacrifice. That's for eating. Oh, eating. For offering. Okay. And you can see the crocodiles and the hippopotamus here. They used to catch it. You can see that the colors is still vivid here. So they made the red color from the outside garden. Okay. Okay, and here you will see. You will see here the different types of offerings, like the vegetables and the fruits, Okay. and that here, and that's here how they used to seal in the Nile River by using these wooden beams. And there is a rope here. This rope, they used to pull the rope so it would be faster. Faster. Yeah, and it's like yes, like nowadays they used to do it. Nowadays, Eso no. यहाँ पर थोड़ा क्राउड ज्यादा है, जगह कम है. what's your back? Here, is here on a large scale, holding a lotus flower and smelling another one. Okay. तो ये सारे हायरोग्लिफ्स यहाँ पर बनाए हुए हैं. Here,
the slaughtering scenes. That's how they used to control, that's how they used to slaughter the cows. They make offerings, and that's some kinds of the meat and the thigh of the cow. Oh, okay. They are taking it piece by piece. Okay. तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कैसे वो एंशिएंट टाइम में जानवरों को ज़िबा करके सैक्रिफाइस करके जो है ना ऑफरिंग करते थे प्रिंसेस के लिए। तो ये वही है। और यहाँ पे देखिए उसके हिस्से कोई टांग लेके जा रहा है, काफ और उसके पैर या जो भी हैं चीजें ये लेके जा रहे हैं फॉर ऑफरिंग। The princess or still seated in front of offering tables. She is drinking some water here, like you see. Okay, and that's here the jar of the water, and that's here the symbols of the offerings. You see the hands here, the symbols of offerings. Yeah, and this sign means nefer, which means beauty. Beauties. Yeah. Okay. Okay. And here as well, they are offering some offers, many kinds, for in front of the princess. Okay. Okay. And this door behind you, this door is called the dummy gate. Okay. Or the false gate. Okay. So each tomb must have the dummy gate inside it. Okay. Why? That's because of that there is something called the ka and something called the pa. The ka is the soul of the diseased. So any soul should have a gate to get through it. So without this gate, the dummy gate, he can be resurrected anymore. Okay. So each tomb we found in each tomb the dummy gate. There is a gate. Should be. Yeah. Okay. तो ये गेट है बेसिकली जो भी डिजीज रोकते थे उनको जो है यहाँ से तब ये कहा जाता है कि आफ्टर लाइफ में इनकी रूह जाए यहाँ से, तो ये डमी गेट्स बनाए गए हैं। Qua si figurano come la regina si viaggia di pesca o caccia al lungo alla barca unica sua. That's how they used to grab the sarcophagus and some boxes, including the equipments of the princess. Okay. And I will show you where they left the sarcophagus. Okay. When you say sarcophagus means the like the dead body. Yeah. Okay. Then how they carry the dead body? Yes, the dead body is inside this. Yes, coffin. Yeah, coffin. And also they use some like this for the equipment. Okay. This one is small for the equipment of the princess. Princess. Here, ये अंदर चल। how they used to put the sarcophagus. Okay. This is the place they will pay to take. Inside it here, and they make it here like this short to be difficult for grabbing out the sarcophagus from tomb robbers. Okay. That's here and here. Okay. So this is where they will bring the Yes, they put the sarcophagus and place the equipment of the princess Okay. here. Okay. छोटे छोटे कमरे हैं यहाँ पर वो उसका कॉफिन या जो भी जनाजा था लाके रख देते थे इन जगहों पर ही ये जो, और इसको छोटे से ये गेट है इसको बंद कर देते थे ताकि बाद में कोई आके चुराए ना या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें बाहर ना निकाल सके। ये इस तरीके के छोटे छोटे गेट हैं ये। राइट। तो यहाँ से हम एंटर हुए थे, ये वो जगह है और अभी हम जा रहे हैं वापस नेक्स्ट। ये कह रहे हैं कि ये कारपोरेट नहीं है, कारपेट। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कारपेट म्यूजियम है और उसमें 10-15 मिनट हम देखेंगे कैसे हाथ से कारपेट जो है बनाई जाती हैं
और उसके बाद जो है हम लोग जाएंगे दहशुर। वहाँ पर भी कुछ पिरामिड्स हैं जैसे यहाँ सखारा में हैं, और वो पिरामिड्स एक्सप्लोर करेंगे। गुड मॉर्निंग। Nice to meet you. I'm from India. You're welcome. Thank you. Thank you. You need to drink something? No, I'm good. If you like it, okay, we'll explain for you. Okay. Okay? Now I give you an idea about the work. This is the Memphis Card School handmade carpet. Okay. We have here four collection production. We have here four collection production for carpet. The first collection wool. We have a woolen silk. We have a silk one. This is for the pharaonic. Okay. For the pharaonic. This is the wool oriental. Okay. Yes. तो यहाँ ये हैंडमेड कालीन है, बहुत सारी हर तरीके की वुलन, सिल्क, कई तरीके की डिजाइन्स जो इन पर बनाई जाती हैं। तो ये वही समझा रहे हैं अभी यहाँ पर। तो काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर शायद इनके ये कलेक्शन है। That's it. Now I'll show you something. Okay. These are all handmade. All handmade, all collection handmade, but different quality silk, wool and silk, wool and cotton, wool tapestry. यहाँ के घर, खेती, सब आप देख सकते हैं इंडिया से कितना मिलता जुलता है। هو زي ما انت بتبدا فاهم بتخش تشتري منه حاجه، والناس اللي جوه فاهم ايه بيغلوا بحاجه عشان خاطر الامان كده والكلام. قفلت عشان المشروب الجميل 4 والله كمان دخلت قطن وريحه وبردي لا استنى وبردي وممنوع. هتكلم الموسيقى اقول له اعرفهم ان ديت حاجه فاهمني ان عندك انت تقيله وبتاع فاهم. तो हम दाशोर के एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं और हमारे टूर गाइड भाई जो है टिकट लेने गए हैं। तो अभी बढ़ते हैं यहाँ से। ان انت جيت اصلا، محدش قال لي اي حاجه، ولا انت كلمتني، ولا انا اصلا بشوف حد من العيال بقالي كتير. انت رجعت؟ يلا. طب وانت بتكلمني لما رجعت يا اسطى؟ Okay. Okay. So we have here in Dahshur 3 pyramids. 3, yeah. Okay. This one is called the Bent Pyramid. Okay. And you Can you come front here? Yes, I sure. will. And you can see why it's called the Bent Pyramid. If you focused here, you will see in the middle there is just a line. Line, yes. So it's kind of bent like that. Okay. Exactly. So that's change in the inclination, in the degree of the inclination. Okay. Okay. So first we have this one. This one had been built first before this one. This is the Red Pyramid. Okay. Okay. So we have the Bent Pyramid and the Red Pyramid, and we have this pyramid as well, but it's collapsed. It looks like a sphinx from here, but it was a pyramid. Okay. It's called the Black Pyramids. Oh yeah, I mean it's kind of like black, yeah, different like color. Black. Yes. Okay. Those 2 pyramids had been built by a king called King Snefru for the 6th dynasty. Okay. 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 So King Snefru here, he was executing how to build such a true pyramid, not stepped one. Okay. So here he started to build the pyramid, but he started by this base with the angle which was 54 degree. So when he reached to the middle of the construction of the pyramid, he started to see some cracks happened in the rocks. And the cracks happened even inside the pyramid itself. Okay. So he started to think how to save it. So how he save it, do you think?
He saved it by changing the angle to be 43 degree, not 54. Oh. So by reducing the angle, he will reduce the amount of the rocks. He will reduce the weight. Okay. So that's how he saved the pyramid. He succeeded in saving the pyramid, and this pyramid is standing till now. Almost 5,000 years. Yeah. So it's an interesting thing. Definitely. Yeah. So while he was constructing this pyramid, in the middle of the constructions, Okay. he realized the new angle of the right angle actually, which was 43 degree. So he started to build this one with the right angle from the beginning, 43 degree. Okay. Without any changing in the angle, without any inclination. Okay. So this one supposed to be a practice one. He was practicing. Kind how of, to build yes. it. Yes. Then he built this one. The like original one, like final design. Exactly. Okay. The perfect way. Okay. Okay? Okay. So here you will go, you see this stairs? Right. This stairs will lead you to the entrance of the pyramid. Pyramid. Okay? Okay. You have to go inside the pyramid. We have just, because we don't have enough time, you should go to one pyramid of those. Okay. This is the better one. This Okay? is the better one? Yeah. So All that's right. why we are here now. All right. Okay? Okay. So you will find the entrance, the door. This entrance. तो अभी हम जा रहे हैं इस पिरामिड के अंदर, जो हमारा टूर गाइड अभी एक्सप्लेन कर रहा था वीडियो में। इसको कहते हैं बेंड पिरामिड या झुका हुआ पिरामिड, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर से जो है झुका हुआ है। और टूर गाइड बता रहा था कि अराउंड 43 डिग्री समथिंग इसके आसपास जो है झुका हुआ है। तो पहले जो पिरामिड थे जो अभी हमने सखरा में देखे थे वो स्टेप्ड, लाइक पहले उन्होंने बेस बनाया, फिर ऊपर छोटा, फिर ऊपर छोटा, लाइक इस तरीके से। ये जो है एक सिमेट्री में जो होती है, ये जियोमेट्री एक हिसाब से आप कह सकते हैं ट्रायंगुलर काइंड ऑफ, उस हिसाब से जो है बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये वाला जो किंग था इसने जो है तकरीबन ऑलमोस्ट इसको जो है अचीव कर लिया था, ये ट्रायंगुलर शेप जो है पिरामिड की। बट ये फुली ट्रायंगुलर नहीं है, थोड़ा सा बेंट है, इसलिए इसको बेंट पिरामिड जो है बोलते हैं। तो जैसा मैंने बताया अभी इसका जो बेंट, जो झुका हुआ जो एंगल है वो तकरीबन अभी 43 डिग्री है। ओरिजिनली किंग ने इसको जो बनाने की कोशिश की थी वो तकरीबन 54 डिग्री पर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें क्रैक्स आ गए, जैसा कि गाइड अभी हमें बता रहा था। क्रैक्स वगैरह आ गए अंदर से बाहर से, तो फिर उसने इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो चेंज किया और जो है तब ये स्टेबल हो पाया। स्टेयर्स जो सामने आपको नज़र आ रही हैं पिरामिड के अंदर हमें लेके जाएंगी, चढ़ते हैं अभी इनके ऊपर। Вот здесь стоит сколько будет, если прибавить. Сколько будет плюс 1. Все это знают. Миска. Папа. तो ये अगेन हम इस पिरामिड के अंदर जा रहे हैं, और ये पिरामिड जो है बनवाया तो किंग सेनेरको ने तकरीबन 4500-5000 साल पहले। और ये इसमें एंट्री जो है ना उससे भी ज़्यादा टाइट है, लेकिन चलते हैं।
Before I said ask him for that screen. Hi. ऑलराइट, अभी मैं जा रहा हूँ वापस निकल के, क्योंकि अंदर जो है नीचे तक जाना बहुत टाइम लगेगा और टाइम हमारे पास है नहीं। और जैसा अभी सखरा पिरामिड में जो थे गए थे अंदर, वैसा ये होने वाला है। तो वहाँ नीचे तक जाने में इसमें ये टाइम बहुत लग रहा है और अनफॉर्चुनेटली हमें और भी बहुत जगह जाना है। फिर जो है मैंने बाहर निकलने का डिसाइड किया है। क्योंकि रास्ता बहुत मुश्किल है नीचे तक जाने का, ऊपर तक आने का, और काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाएगा उसमें। ये पिरामिड्स बाहर से देखने में लगते हैं कि अच्छा क्या है, जब अंदर आओ तो उनकी असल हकीकत पता चलती है। बहुत बड़े हैं, ह्यूज, जाइंट। वापस चलते हैं भाई। यही पीछे जो है ना पिरामिड है, यहाँ अंदर जाने की कोशिश हम कर रहे थे, लेकिन चलते हैं। 100 मीटर का तकरीबन 80 मीटर की गहराई में है वो, और अंदर कर जाने के बाद आप खड़े होकर जा भी नहीं सकते, पूरा बैठ के आपको जाना है और वैसे ही ऊपर आना है। और गर्मी भी बहुत थी, टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। टाइम है आपके पास, आप जा सकते हो, लेकिन ऑलरेडी एक पिरामिड हमने देख लिया अंदर जाके कैसा है। ये भी वैसा ही सेम जो है ऑलमोस्ट है, और टाइम है नहीं हमारे पास, तो मैंने सोचा निकलते हैं यहाँ से और अपनी दूसरी जगह जो है वहाँ एक्सप्लोर करते थे। अब ये शायद हमें लेके जाने वाला है मेम्फिस। तो हमने सखरा कवर कर लिया, पीछे ये दासुर पिरामिड है, और एक और पिरामिड है यहाँ पे दाशुर में, सामने आपको नज़र आ रहा होगा रेत के टीलों के पास। तो ये दोनों पिरामिड जो हैं दाशुर के हैं, इसको रेड पिरामिड बोलते हैं, और जिसके अभी हम अंदर गए थे ये जो मेरे पीछे है इसको जो है बेंट पिरामिड बोलते हैं, झुका हुआ पिरामिड। अब हम यहाँ से जाने वाले हैं मेम्फिस और देखते हैं वहाँ पे क्या है।